कि a test set which detects all single stuck-at faults at the checkpoints of a combinational circuit, it is able to detect all the stuck-at faults in that circuit. Now, what does that mean? That simplifies the concept. I'll just go back. First, I like to tell you what are checkpoints. Checkpoint का मतलब है इधर वो प्राइमरी इनपुट है या फिर वो मेरा फैन आउट ब्रांचेस है. ठीक है. सो इस व्हाट डज दिस सेज कि इफ वी आर एबल टू detect all the single stuck-at faults either at the primary inputs or the fan out branches, then I need not consider any other single stuck-at faults in my circuit because it will cover all other single stuck-at faults in my circuit. Now, how does that change what we have learned? Now consider here, अब इसमें कोई फैन आउट नहीं है लेकिन हमारी इसमें प्राइमरी इनपुट्स कितनी है? 8 प्राइमरी इनपुट्स है. यस और नो? यस मैम. सो वो क्या कहता है इसमें, अब हमारी इसमें चेक पॉइंट थ्योरम की अगर हम एप्लीकेशन लगाते हैं, वो कहता है कि अगर मैं अपनी प्राइमरी इनपुट और फैन आउट ब्रांचेस के ऊपर स्टक-एट फॉल्ट डिटेक्ट कर लेते हैं हम, तो हमें और किसी ब्रांच पे या और किसी लाइन पे फॉल्ट देखने की जरूरत नहीं है. जो हम ये इंस्पेक्ट कर रहे हैं, हमें इंस्पेक्ट करके वी नीड नॉट गो टू द लेवल्स even at the output node. So it says because it comes from the fact that the signal is either being propagated as coming from the primary input. So if this is at fault, it will only lead to some fault at the further point. Okay. Or it is going to get propagated through the fan out branch. So अगर हम दोनों के faults को detect करें, हमें separately individual lines पे detect करने की जरूरत नहीं है. That is the checkpoint theorem. So how does it change? Now that says only primary inputs पे हमें consider करना है. So primary input मेरी कितनी है? 8 है. तो मैं इन्हीं पे consider करूंगी. So इन्हीं पे अगर मैं dominance का मॉडल लगाती हूँ, so I have 3 faults coming from each gate which are connected by these primary inputs. 4 ऐसे हैं. So 4 into 3 covering all my primary inputs, that reduces my number of faults to be detected to 12. So my collapse ratio will actually become 12 by 30. So it further reduces. So this is application of checkpoint theorem. ठीक है. तो हमने fault equivalence कर ली, fault dominance कर ली, and there is a checkpoint theorem which is further summarizing the thing for me कि मैं अगर fault dominance का concept यूज कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ प्राइमरी इनपुट और फैन आउट ब्रांचेस पे ही डोमिनेंस फॉल्ट करने की जरूरत है एप्लीकेबल. अदरवाइज मुझे और कोई भी फॉल्ट डोमिनेंस देखने की जरूरत नहीं है. ओके, फाइन. So this is your checkpoint theorem. So this was all about our single stuck-at fault models. So with this we finish this topic. Next we are going to cover certain other types of faults, that is bridging faults, then your transistor faults. Yes, then fault simulation. Yes, that is it. So I'll share this lecture and slides with you. If any problem, you can get back to me in the next week. Okay, and all the best to all of you for Intel, which is coming tomorrow. Just take a note of your attendance.
Thank you so much. I'm ending the meeting. Thank you, ma'am. Thank you, beta. Thank you, ma'am.